From Niti Aayog, Dr. Berect Debroy, Finance Secretary Rajiv Maharshi ji, and Secretary for Rural Development Shri Jugal Kishore Mahapatra ji, and other related to this launching of our SCC occasion. We have now a reasonably reliable data on rural households through the first ever socio-economic caste census. As Honorable Minister for Finance said that the name doesn't indicate our caste is not being reflected in our data, but still the name is socio-economic caste census. Data is respondent-based revealed input that has withheld the scrutiny of Gram Panchayats and has the endorsement of Gram Sabha. Out of 24.91 crore households, nearly 1.24 crore, that is 6%, had raised claims and objections about this. 97% of the claims and objections have been resolved. We have now details, assets and deprivations of each of the 17.91 crore households. We are now on the cusp of a huge development shift that will move the numbers of poverty to the names of the villages that need government intervention, which is explained by the Honorable Minister also. The idea is to deal with all the aspects of poverty of the families simultaneously, be it food, housing, jobs, education, health, skills, social grouping, or giving the poor voice in the village or the panchayat. SCC imparts us the opportunity to rank households on multiple factors. Importantly, it allows us to address each aspect of poverty of households in a convergent manner. Development programs and schemes therefore now have the vehicle to coverage on each household. Our endeavor should now be to saturate program in the panchayats to allow panchayats to be declared poverty free. SCCC work was a huge nature. The task ahead is to use the SCCC data in a dynamic way to monitor over time the changes in household status on socio-economic variables. It is a work in continuum. This SCCC data must be dynamic. My team is endeavoring to assign a unique number of each to every household by linking NPR, TIN, Aadhaar, electoral rolls, number, etc. The data must be connected. Development program data serves need to connect, talk, and add value to each other. My team is certain that it is possible to develop such a base that generates complete progress report of each household. There is also a need to re-examine the current deployment of government functionaries under different administrative jurisdiction. If we talk of panchayats, there are about 5 to 6 functionaries that are working in the same panchayat space. And even in some of the bigger panchayats, the number may be more than 10, 15, 20. But they are neither able to give quick feedback nor a contributing to convergence of these schemes. I would like to hear the views of those who are here, those who have worked with this. And last, I thank you, Honorable Finance Minister. He has also given me the opportunity to express my
views and the work done by my ministry, that is first of its kind, and in it, as it has been explained, it's most dynamic, and as I have explained, cutting across caste line. Now there may be something new on which the development targets could be fixed. That is what the new initiative which I have asked, that not only my ministry but all the ministries and even the state governments, they would make full use of this. Thank you. Now for the moment of truth. If you could just click one, this one. Just one click. And then just. And if so you can see the home page of the census now. So if I may kindly request the media to leave the room, and then we can continue with the next phase of our discussion. Thank you all very much for coming. Thank you. So meanwhile, can we load? So as the media is leaving, now we're going to have a presentation by Shri Jugal Mahapatra on the highlights of the SECC. So as soon as the press leaves, I think we can start the program. Are we giving the press a copy? Yeah, the press has got there's a press release of this, and of course it goes without saying that after the event you're welcome to talk to all the people and ask questions as you choose, as you think necessary. Yeah, thank you. तो यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें, ये बड़ा दिन और अपने आप में अनोखा और अनूठा प्रयास हमारे देश में, जहाँ पे जातिगत जनगणना पर आंकड़े जारी किए हैं सरकार ने। आपने देखा वित्त मंत्री अरुण जेटली और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर राव बीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने इन आंकड़ों को जारी किया। देश में पहली बार हुआ है जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इस सर्वे से, इस सेंसस से अब कम से कम ये पता लग पाएगा कि कौन सी सोशियो इकोनॉमिक यहाँ पे फैक्टर्स हैं और कौन से ऐसे समीकरण बने हुए हैं देश के अंदर, समाज के रूप से, आर्थिक रूप से और जाति के रूप से, जिसके अंदर लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इससे ये भी जानने की हमें सहायता मिलती है कि कितने लोग हैं हमारे देश में जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो इससे कम से कम एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने देश का होगा कि यहाँ पे हमारी देश की जो जनता है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो इस वक्त किस हालात में और कौन लोग कैसे अपने जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। आपको बता दें सभी 640 ज़िलों में इस जनगणना को किया गया और यहाँ पे ये आंकड़े इस बात के लिए भी मदद करेंगे कि कितने लोगों तक जो सरकार की सहायता है यानी कि सब्सिडी है उसको पहुँचाया जाए, ताकि जो असल हकदार है सब्सिडी का उसको ये सहायता दी जा सके। तो आपको बता दें अपने आप में ये अनूठा और अनोखा प्रयोग हमारे देश में, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जारी किया है, कास्ट सेंसस जारी किया गया है, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने इन आंकड़ों को जारी किया सबके सामने। तो कितनी आबादी शहरों में है, कितनी आबादी गांव में रह रही है, किस हालात में लोग रह रहे हैं,
कौन से वो घर हैं जहाँ पे एक गाड़ी है, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, जहाँ पे, क्योंकि ये वो पैमाने हैं जिससे कि हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो आखिर है क्या। कौन से वो लोग हैं जिन्हें वाकई में इस सरकार की सहायता की, सब्सिडी की ज़रूरत है। ऐसे तमाम प्रयोग किए गए, तमाम सर्वेस किए गए, जिसके बाद यहाँ पे जातिगत जनगणना को जारी किया गया, जिससे कि सहायता मिलेगी ये जानने के लिए कि यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रहते हैं और इसके साथ ही में कौन लोग हकदार हैं सब्सिडी के।